Namaste. I am Anshuma Srivastav, clinical educator at Antara Senior Care. Today we will discuss about urinary catheterization. Let's start with the definition. Bladder catheterization is a commonly performed procedure in all hospitals. Urinary catheterization is a medical procedure where a thin, flexible tube called a catheter is inserted into the bladder through the urethra, allowing urine to drain from the bladder into a collection bag outside the body. Indications of urinary catheterization. यूरिनरी कैथेटराइजेशन को इंसर्ट करने के दो मेन रीजंस होते हैं, थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। थेराप्यूटिक मीन्स हम पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए या उसको किसी बीमारी से बचाने के लिए फॉलिस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। एंड दूसरा डायग्नोस्टिक, जिसमें हम पेशेंट की बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रोसीजर को करते हैं। थेराप्यूटिक रीजंस इंक्लूड यूरिनरी रिटेंशन, pre-operative, urinary incontinence, social and hygiene reasons, acutely ill patients requiring close urinary output measurement, chemotherapy drug delivery, bladder irrigation. Diagnostic reasons include measurement of urodynamics, sample collection for urine analysis, radiographic studies such as cystogram. Now we will discuss about types of Follis catheter. We have several types of Follis catheter, but main types of Follis catheter which are often used are latex Follis catheter. It is used in general catheterization. It is flexible and cost effective. It can be used for 14 to 15 days. Silicone Follis catheter. It is used in long-term catheterization. Less risk of irritation and suitable for patients with latex allergies. It is used for 28 to 30 days. Suprapubic catheter. It is inserted directly into the bladder through the abdominal wall. Often used when urethral catheterization is not possible or advisable. It is used for 28 to 30 days. Condom catheter. It is used when men is having mild to moderate urinary incontinence, post-surgical patients who need temporary urinary management, patients who prefer a non-invasive alternative to indwelling catheter. It can be used for 24 hours. Before starting any procedure, few things must be kept in mind. Check for doctor's order, explain the procedure, maintain privacy of the patient. We must perform hand washing. We must collect all the articles which are required for the procedure, and a proper light source should be present. Articles required for urinary catheterization: a clean tray containing sterile gloves, sterile water, single-use lubricant and anesthetic gel, catheter, catheter bag, catheter tray containing waterproof pad and torch. Now we will discuss about the procedure of Follis catheterization. सबसे पहले हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द प्रोसीजर एंड एनकरेज हिम टू आस्क क्वेश्चंस. मेंटेन पेशेंट्स प्राइवेसी ड्यूरिंग द प्रोसीजर. पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाना है. इन केस ऑफ फीमेल पेशेंट, आस्क हर टू लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन एंड बेंड हर नीज. This position is known as frog leg position. Place a disposable pad beneath the patient's buttock. Perform hand hygiene. Open the sterile tray's outer flap. Wear sterile gloves. Open the catheter tray. Patient को sterile sheet से appropriately cover करना है, allowing to expose the genital area. Betadine solution को small bowl में pour करना है, which is present in catheter tray. Clean the perineal area with gauze piece using sponge holder. Use single gauze for single stroke. Start cleaning from farthest area towards nearest. We will clean the pubic area first by starting horizontally, then vertically and then in zigzag manner.
We will clean the labia majora, then labia minora with a single stroke each. Use the non-dominant hand to expose the urethral meatus by separating the labia and prepare the meatus with an antiseptic solution. Clean the genital with non-dominant hand. Ask someone to help you in opening the Follis catheter wrapper. रैपर के ऊपर के पार्ट को पुल करके ओपन करना है एंड फॉलिस कैथेटर के टिप को लॉक्स जेली से लुब्रिकेट करना है एंड जंक्शन को किडनी ट्रे में रखना है. जेंटली फॉलिस कैथेटर को यूरेथ्रा में इंसर्ट करना है टिल द जंक्शन. मेक श्योर द कैथेटर इज नॉट इंसर्टेड फोर्सफुली. Once the catheter is inserted and we can see the urine collecting in kidney tray, connect the Follis to urinary bag. Fill 10 to 15 ml of sterile water into the balloon of catheter via second lumen of Follis catheter. Secure the Follis catheter on upper part of thigh with micropore. Hang the urine bag below the bladder level. Put date and time of insertion on Follis catheter and urine bag. Maintain documents. Follis catheter को इंसर्ट करने के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं. Let's discuss about contraindications of Follis catheterization. Number 1 is injury at the meatus. अगर पेशेंट को meatus में या यूरेथ्रा में कोई इंजरी हुई है तो Follis catheter इंसर्ट नहीं करना चाहिए. Number 2, अगर पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ रहा है तब भी Follis catheter इंसर्ट नहीं करना चाहिए. अगर पेशेंट को कोई भी यूरेथ्रल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तब भी Follis catheter इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. नंबर 3, अगर पेशेंट को यूरेथ्रल पेन और डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट है तब भी Follis catheter इंसर्ट नहीं करना चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नंबर 4, अगर पेशेंट रिफ्यूज करता है तब Follis catheter इंसर्ट नहीं किया जाएगा. नाउ आई विल समराइज द टॉपिक. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट urinary catheterization, indications of urinary catheterization, different equipment used for urinary catheterization, procedure of urinary catheterization and contraindications of urinary catheterization. Thank you.